Good evening, everyone. Welcome to today's live expiry for Silver Mini options, MCX Silver Mini options. So we have been doing these live expiries since last 2 months. Last expiry हम लोगों ने MCX crude oil के लिए किया था, which was a very profitable session. So live session जो हमारा crude oil का हुआ था, that time we were able to catch 100 points move on the downside through options. सो आज सिल्वर मिनी का ऑप्शंस का एक्सपायरी है. सो वी विल क्विकली गो टू द चार्ट्स एंड विल सी हाउ द सिल्वर मार्केट इज प्लेइंग आउट. एंड जैसे ही हम लोग चार्ट्स पे आते हैं अभी, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ सिल्वर मिनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ द सिल्वर market is going since last few days or weeks. So this has been the price action. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक ऑल टाइम हाई बना के बाद में प्राइस आर कंसोलिडेटिंग ऑन द लोअर साइड. तो अगर आप देख सकते हो कि लास्ट बहुत वीक से प्राइस ये कंसोलिडेट करे ऑन द डाउन साइड. सो आज के लिए तो हमारा इंट्राडे प्राइस एक्शन मैटर करेगा, बट वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग कि आगे जाके इन द नियर फ्यूचर, इन द कमिंग वीक्स, इन द कमिंग मंथ्स प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं. So as long as this falling trend line is not breaking on the higher side, जिसका अभी रेजिस्टेंस आ रहा है 2,65,000 के आसपास, वो जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक वी कैन सी कि प्राइस कैन गो डाउन टुवर्ड्स दिस सपोर्ट लेवल. ये 2,05,000 का लेवल आ रहा है. सो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी माइट सी प्राइसेस गोइंग लिटिल लोअर टुवर्ड्स 2,05,000 ऑन द डाउन साइड. अभी नाउ कमिंग टू द इंट्राडे चार्ट. अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट देखते हैं सिल्वर मिनी का, सो यहाँ पे ओवरऑल एक थोड़ा रिकवरी आया था, बट इट्स नॉट सस्टेन्ड. ये सस्टेन नहीं हो रहा है रिकवरी. सो दैट बिकॉज ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है, ओवरऑल जो ट्रेंड है, दैट इज ऑन द डाउन साइड. सो वी विल क्विकली लुक फॉर द ट्रेड. सो हम लोग अभी 2,36,187 चल रहा है. सो आई विल आस्क एवरीवन टू कीप 2,35,000 पुट ऑन देयर रडार. जैसे ये दिस कैंडल क्लोजेस ऑन द डाउन साइड, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है इन द नेक्स्ट 5 minutes, वी विल गो फॉर द पुट ऑप्शन बाइंग ऑफ 2,35,000. एंड आज के लिए आई वुड से कि इम्पोर्टेंट इवेंट कोई नहीं है, बिकॉज देयर इज अ यूएस बैंक हॉलीडे. सो आई गेस देयर वोंट बी मच मूवमेंट, बट अगर ये ब्रेकडाउन आता है देन वी माइट गो लोअर टुवर्ड्स 2,32,000, 2,33,000 लेवल्स ऑन द डाउन साइड. तो इतना एक एक्सपायरी डे के लिए 2 से 3,000 पॉइंट का मूव बहुत हो जाता है. सो ये जो 2,35,000 का पुट अभी चल रहा है, दैट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1360, 1350, 1360. तो वो आप बाय कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट यू कैन बाय नाउ ऑल्सो. 1360 का अभी 1350, 1360 के आसपास चल रहा है. सो आई वुड सजेस्ट टू गो लॉन्ग ऑन दिस पुट एट 1360. एंड इसका जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, दैट विल बी एट अराउंड 800. सो 1360 का आपको 1360 पे आपने बाय करना है, 800 का स्टॉप लॉस रहेगा. सो एज वी स्पीक इट हैज गॉन डाउन. तुरंत ये 1538 हो गया है. सो 1360 पे भी रिकमेंडेड है 1360. नाउ इट्स एट 1531. और सिल्वर के प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं. 2,35,780 हो चुके हैं. वी सॉ एट 2,36,000. अगर ये कैंडल क्लोज होता है यहीं पे, वी आर लाइकली टू सी अ फॉल ऑफ 2,000 to 3,000 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड. सो लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट इन नेक्स्ट 15 or 20 minutes. हमें एक बड़ा मूव कैच करने मिलता है या नहीं. एंड आज के दिन के लिए एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलना, दैट इज ऑन द अपसाइड 2,38,000. 2,38,000 जब तक ऑन द अपसाइड ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट रहेगा इन सिल्वर मिनी. सो आज के दिन के लिए सेल ऑन राइज काइंड ऑफ ट्रेड्स ही करने की सलाह रहेगी. सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू बाय 2,35,000 पुट. एंड इफ समवन wants to go for the in the money puts, they can go for the 2,40,000 puts also, which is currently trading at 4,550 or 4,576. So ये 1360 पे हम लोगों ने बाय किया था, which is now trading at 1460. So let's see. अगर ये कैंडल सस्टेन होता है, then I will ask everyone to add more lots, because this could be the big winning trade for us if price goes below by 2,000 or 3,000 points on the downside. एंड इसके अलावा अगर हम लोग न्यूज बेसिस की बात करें, तो आज तो कोई डेटाज आर नॉट गोइंग टू बी रिलीज्ड. मेजर डेटाज आर नॉट देयर, बट वी हैव सीन द न्यूज कमिंग आउट कि फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ चुके थे. एंड yesterday there was unemployment data was also released. So in सबका जो impact है, that is overall negative for bullions as of now. and अभी जो recently जो US ईरान के जो tensions है, जो एक
एक उनमें एक पीस डील के संभावना थी, वो भी अभी विच इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली, इट्स नॉट श्योर येट। सो ये भी एक निगेटिव न्यूज है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो अगर पीस डील नहीं होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस हम और नीचे देख सकते हैं इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स ऑल्सो। सो जैसे मैंने वीकली चार्ट डिस्कस किया था, आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स में दिस सिल्वर MCX silver is we can see it at around 2,03,000 or 2,05,000 kind of level. So यहाँ से 20 से 30,000 पॉइंट का फॉल आने के चांसेस है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट गोइंग अबाउट दिस 2,62,000 लेवल। सो 2,62,000 जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक इसमें एक बड़ा तेजी आने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। फिलहाल के लिए मंदी के ही चांसेस है। द व्यू लुक्स वेरी बेरिश एज ऑफ नाउ, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट क्रॉसिंग अबाउट 2,62,000। सो हम लोगों ने आज के लिए 2,35,000 का पुट चूज किया है फॉर एक्सपायरी, बिकॉज फॉर एक्सपायरी वी हैव टू कैच द मोमेंटम एंड द मोमेंटम इज लुकिंग ऑन द डाउन साइड। जैसे हम लोगों ने जैसे ही स्टार्ट किया था सेशन, वी वर एबल टू सी कि एक ब्रेकडाउन आ रहा है एंड दिस ब्रेकडाउन कैन कंटिन्यू। अभी 2 मिनट में ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, देन लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है, दिस द लो दैट आई हैव मार्क्ड, ये ग्रीन कैंडल का जो लो है which is at around 2,35,160। सो ये अगर आज ब्रेक होता है, सो जो मैंने टारगेट बताए हैं, जो 2,33,000 2,32,000, दोज आर वेरी पॉसिबल टुडे। सो जो हम लोगों ने ऑप्शन 1360 पे बाय किया है, दैट कैन गो हायर अप टू अराउंड 3,000 और 3,500 ऑल्सो। सो इसमें 1360 पे हम लोगों ने बाय किया एंड 700 का हमारा स्टॉप लॉस है। एंड दोज हु डोंट नो अबाउट द लॉट साइज, इसका लॉट साइज 5 का लॉट साइज है। So per rupee change will be 5 rupees for you. So that's a risk of around 700 points, 700 into 5. That will be the risk. And I will ask everyone to keep proper stop losses, because if trade is not going in our favor, we will not hold it till it goes zero. And also I would ask everyone to not risk more than 2% of their capital on a single trade. So ये single trade पे ज़्यादा capital आपको risk नहीं करना है, more than 2% of your capital. सो 1302 अभी चल रहा है। द ब्रेकडाउन इज स्टिल सस्टेनिंग 2 लाख, बट थोड़ा ऊपर आ चुका है, बट हमारा जो ऑप्शन है दैट इज स्टिल एट 1360। आज के लिए मोमेंटम इज लुकिंग बेरिश। जो ये सुबह से मूव आया था दैट कुड नॉट सस्टेन ऑन द हायर साइड एंड प्राइस इज शोइंग दैट इट्स गोना गो डाउन। एंड आज अगर कुछ न्यूज आता है इसके रिगार्डिंग, देन वी कुड सी गुड मूव इन द इवनिंग सेशन ऑल्सो। बट जैसे मैंने बताया कि आज यूएस बैंक हॉलीडे इज देयर, सो we are not expecting any key data in the evening session. But US Iran के related कुछ news आता है, then we might see a good move. And 2,36,000 का जो level है वो अगर break होता है, then 2 से 3,000 का fall easily we could catch. So going into silver again, we'll look at this gold. Okay, so the candle has closed now. Candle इसके नीचे close हुआ है. So let's see next candle अगर sustain होता है इसके नीचे, which is 2,36,300 400 kind of level, इसके नीचे अगर sustain होता है this candle also, and if it breaks the low of this candle, we are likely to see a good fall of 2 to 3,000 points. As of now option थोड़ा 1250 1260 kind of चल रहा है। In the last session also where we were discussing about the crude options, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, थोड़ा डीके हुआ था, then again that option went up to 200 rupees in the evening. सो हम लोगों ने 70 रुपीज पे उसको रेकमेंड किया था, 70 या 77 पे, एंड दैट ऑप्शन वेंट अप टू 200 ऑन द एक्सपायरी डे। सो दीज आर द काइंड ऑफ मूव्स दैट यू कैन कैच ऑन एन एक्सपायरी डे इफ देयर इज अ मोमेंटम। सो मोमेंटम इज लाइकली टू बी ऑन द लोअर साइड ओनली फॉर सिल्वर मिनी फॉर इंट्राडे। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन, आप पुट साइड में ही बने रहना एज लॉन्ग एज 2,38,000 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है। सो आज के लिए 2,38,000 विल बी द की रेजिस्टेंस and immediate 2,36,000 will be the key support. And as जैसे मैंने बताया कि आज कोई डेटाज ज़्यादा रिलीज नहीं होने वाले, सो ऑन द ऑप्शंस फ्रंट, ऑन द ऑप्शंस चेन फ्रंट, अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 2,30,000 के जो पुट्स है उसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, एंड ऑन द कॉल साइड 2,45,000 के कॉल्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। सो इफ एनीवन वांट्स टू डू द शॉर्ट ट्रायंगल can go for 2,30,000 calls and 2,45,000 puts. इसको आप शॉर्ट कर सकते हो दोनों को, जिसका कंबाइंड प्रीमियम इज एट अराउंड, एक का है 350 चल रहा है एंड एक का 150 चल रहा है। सो 500 का प्रीमियम है अप्रॉक्स,
ओवरऑल प्रीमियम कंबाइंड प्रीमियम, वो आप शॉर्ट कर सकते हो एंड कीप द स्टॉप लॉस ऑफ कंबाइंड प्रीमियम ऑफ 1000 रुपीज। अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे आई वुड से एक्सपायर होता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, तो आज रात को अगर क्लोजिंग यहीं पे आता है आफ्टर 10-11:30, तो आपका जो ये कंबाइंड प्रीमियम है दैट इज लाइकली टू गो जीरो, because we are selling out the money options, and out the money options always expire worthless at the time of expiry. अगर जब तक वो इन द मनी नहीं होते हैं तब तक उनका वैल्यू जीरो होता है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। सो दिस इज द प्योर टाइम वैल्यू दैट वी आर प्लेइंग, दैट वी आर ट्राइंग टू कैच। इसको हम लोग बेचेंगे तो ये जीरो होने के चांसेस ज़्यादा है। सो फॉर द ऑप्शन सेलर्स ऑल्सो आई हैव गिवन यू अ ट्रेड। Those who are option sellers can go for the 2,30,000 put and 2,45,000 call. This strategy is called as short strangle. इसमें हम लोग दो आउट द मनी ऑप्शंस बेच रहे हैं, एक कॉल है एक पुट है, और अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे क्लोज होता है then both these options are likely to go zero. And for option buyers, we have suggested 2,35,000 put at 1360, now it's 1260. इसका स्टॉप लॉस 700 रुपीज का रहेगा। 700 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है आपको वेट करना है। एंड अगर इवनिंग में एक फॉल आता है बिलो 2,36,000, देन दिस ऑप्शन माइट गो टू 3,000 ऑल्सो। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट 10 minutes or so how it's working out, then we will decide if we can take any other trade or if we can go for any other options. Meanwhile, looking at other commodities also, if we look at other commodities, there has been a very sideways movement today. बट अगर आप देखते हो एनजी का चार्ट, एनजी ने एक कल बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। इफ वी लुक एट द आवरली चार्ट, ये 295 के आसपास एनजी ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। 2 बार 295 का लेवल उसने रिस्पेक्ट किया है एंड इट्स नाउ एट 303। सो इमीडिएट इसका जो इन्वेंट्री के बाद रिएक्शन आया था दैट वाज पॉजिटिव। इन्वेंट्री वाज आल्सो सपोर्टिव फॉर द प्राइसेस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द रैली टू रिज्यूम। तो अगर कोई एनजी के ट्रेडर्स है वुड लाइक टू ट्रेड इन एनजी, कैन बाय एनजी फॉर द पोजिशनल पर्पस। यहाँ से 320-322 तक के लेवल्स के आने के चांसेस है। आप स्टॉप लॉस इसमें 294 या 293 का नीचे रख सकते हो, थोड़ा 295 के नीचे बफर रख के 292 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, एंड यू कैन एक्सपेक्ट द टारगेट्स ऑफ 315-320 ऑन द हायर साइड। सो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 300 एनजी एक्सपायरी इज ऑल्सो लाइकली टू बी देयर ऑन ट्यूजडे, तो उसका भी हम लोग लाइव सेशन ऑफ कोर्स करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इट्स लुकिंग बुलिश। तो अगर किसी को कैरी भी करना है एनजी में ट्रेड, तो दे कैन गो फॉर द 310 ऑप्शंस और 305 कॉल ऑप्शंस। दे कैन बाय एंड कैरी देम फॉर द मंडे। सो अगर मंडे को जो अगर गैप अप होता है तो दैट मूव वुड नॉट बी मिस्ड। वी ऑल्सो हैव अ ऑफिशियल पोजिशनल कॉल बाय कॉल इन एनजी जिसका स्टॉप लॉस 295 है, बट 295 2-3 बार टच करके आई वुड सजेस्ट आप 292 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख देना, एंड यू कैन एक्सपेक्ट द टारगेट्स ऑफ 315-320 ऑन द हायर साइड। सो एज वी स्पीक, सिल्वर मिनी इज एट 2,36,000 ओनली, बट ये ऊपर जाने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल गो डाउन फॉर रेस्ट ऑफ द डे as long as it's not going about 2,38,000. So going into other commodities, let's look at the gold chart. ये गोल्ड का स्पॉट गोल्ड का चार्ट है। अगर हम देखते हैं तो स्पॉट गोल्ड अभी 4153 चल रहा है। Since last many sessions that we have done for gold and all other expiries, we have been explaining कि वीकली चार्ट पे स्पॉट गोल्ड हैज शोन द रिवर्सल साइंस एंड ऑल दैट वी हैव बीन एक्सप्लेनिंग, एंड वहाँ से बहुत एक फॉल आया था स्पॉट गोल्ड में सिंस लास्ट 2-3 वीक्स। अगर आप देखते हो कैंडल्स, दोज हैव बीन वेरी नेगेटिव। सो गोल्ड भी एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज वेरी नेगेटिव। द सपोर्टिव न्यूज दैट वाज देयर कि अभी नीचे जो एक लो मारा था अराउंड 4,000 के आसपास, 4,030, 4,050, वहां से जो प्राइसेस रिकवर हुए दैट वाज सपोर्टेड बाय द न्यूज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ पीस डील बिटवीन ईरान एंड यूएस, बट दैट हैज नॉट गॉन थ्रू येट। मतलब वो अभी तक 101% श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है। सो अगर वो नहीं होता है, इफ दैट पीस डील फॉल्स अपार्ट, देन वी माइट सी गोल्ड हेडिंग
lowered below 4,000 levels also. So 4,000 के नीचे भी ये जा सकता है. As of now, the trend is bearish only. So if anyone wants to trade in gold for the positional purpose, they can go short in gold. Of course with the stop loss, ऊपर आप stop loss रख सकते हो at around 4380 का. जब तक ये this week's high is not crossed, आप इसमें short में बने रह सकते हो. So let's go to the silver mini. सिल्वर मिनी अभी भी 236 250 के आसपास चल रहा है. देयर इज नॉट मच मूवमेंट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एक इवनिंग में एक मूव आएगा विच कुड टेक इट लोअर टुवर्ड्स 236,000 235,000. सो वो टाइम पे ये ऑप्शन जो है, अब नाउ इट्स एट 1200, वी बॉट इट एट 1360. इट्स डाउन नाउ फ्रॉम अ बाइंग लेवल, बट इट कैन गो अप टू I guess 2,500 or 3,000 kind of levels if the move that we are expecting on the downside happens in the evening. So let's see how it pans out. अभी तो ये 15 मिनट में तो कुछ खास मूवमेंट नहीं आया है, but the breakdown is sustaining. So I'm expecting the move is likely to be on the downside only. And looking at other commodities, if we look at natural gas that we have already explained, let's look at crude oil. Okay, so MCX crude oil futures are trading at around 7180 now. Crude also we have discussed in past few sessions about the weekly chart. These were all the bearish patterns that we were discussing since May, and उसके बाद एक बड़ा फॉल आया है, and now this fall is sustaining. अभी भी chances है कि it might head lower, but what has happened now कि अगर आप देख सकते हो ये weekly chart पे एक यहाँ पे जो ब्रेकआउट का जो उसका लेवल था वहाँ पे उसने अभी सपोर्ट लिया है. सो दिस वाज द काइंड ऑफ ब्रेकआउट जोन जो एक बड़ा मूव आया था, उसके पहले एक ब्रेकआउट जोन था जो एकदम सडनली ब्रेक हो चुका था, तो वहीं पे अभी सपोर्ट ले रहा है. सो इफ दिस सपोर्ट इज नॉट होल्डिंग, अगर ये सपोर्ट नहीं होल्ड होता है जो 6,900 के आसपास है ऑन द MCX क्रूड, सो 6,900 के अगर नीचे जाते हैं क्रूड के प्राइजेस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और वीक्स और सो, तो उसके बाद जो फॉल आएगा that will be very drastic and that can take prices to 6,000 or 5,800 also in the next few weeks. So of course I would ask everyone to keep watch on crude oil also for the bearish move in the coming weeks. So overall all commodities are on the verge of a breakdown. So let's see how it pans out in next few days or weeks. But अभी जो charts दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो commodities are likely to fall much more. Okay, so gold is going down a little bit. Let's go to the silver mini chart back. Okay, so it's now trading at 236,000. As I said, ज़्यादा move sustain नहीं करेगा ऊपर के साइड में. So now it's at 236,000 only. And now option is at 1250, 1280. अगर ये 500-600 का मूव मिलता है हमें इसी सेशन में, सो ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट्स, बट लेट्स वेट एंड वॉच हाउ इट्स गोइंग टू पैन आउट. 1214 it is now trading. Apart from silver mini, I would also request you all to keep watch on natural gas, which we already discussed. Natural gas में आप एक पोजिशनल बाय ट्रेड बना सकते हो, बिकॉज 295 के आसपास उसने एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया दो बार. टू टाइम्स इट टच्ड 295 लेवल्स एंड रिवर्स फ्रॉम देयर. सो 295 के नीचे थोड़ा बफर रख के आप स्टॉप लॉस रख के इसमें एक बाय ट्रेड ले सकते हो फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज. सो एंड नेचुरल गैस एक्सपायरी इज ऑन ट्यूसडे, so according to the expiry also you can play it on the long side, so you can go long for on natural gas options also according to the expiry. सिल्वर मिनी में इतने मूव नहीं आ रहा है, बट आई वुड गिव यू द लेवल्स. what you all can do is if you are a option seller, if you are looking to play option selling, तो इसके लिए मैंने एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी सजेस्ट किया विच इज शॉर्ट ट्रायंगल, विच इज 2,30,000 पुट एंड 2,45,000 कॉल, जिसका 500 का प्रीमियम था. नाउ इट्स एट 450. सो ये आप सेल कर सकते हो
and you can wait till the evening. And if you are an option buyer, आपके लिए 2,35,000 का put है which you have to buy and keep the stop loss of 700. As long as 2,38,000 का level on the futures it's not crossing, I'm expecting it will go down towards 2,36,000 and 2,35,000 later. अगर ये भी लेवल सस्टेन नहीं होते तो आज ही के दिन में हमें 2,32,000 2,33,000 के बीच के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं. सो विच विल बी वेरी गुड फॉर अवर ट्रेड ऑफ ऑप्शन बाइंग. उसके बाद अगर ऐसे लेवल्स आते हैं तो 1200 का जो ऑप्शन अभी चल रहा है इट कैन गो टू 3,000 ऑल्सो. सो आई वुड आस्क एवरीवन टू बी इन दिस ट्रेड टिल इवनिंग and keep the stop loss of 700. Other commodities are also not moving much. Natural gas is trying to recover a bit, going up. Gold is also trying to fall. Okay, 4150 के नीचे आ चुका है गोल्ड. सिल्वर मिनी भी आ गया 2,35,900 के आसपास. So this candle is likely to hold on the lower side. अगर ये होल्ड करता है इसके नीचे, so we will get a good move. Let's see if next 5 minutes we get a good move on the downside. गोल्ड भी 4149 आ चुका है, 4148 आ चुका है. धीरे धीरे करके इट्स लाइकली टू फॉल. 235 का ऑप्शन अगर किसी ने बाय नहीं किया है, मैं सजेस्ट करूंगा अभी भी आप बाय कर सकते हो. 1280 चल रहा है, सो आपको थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा है. 1360 वी हैड सजेस्टेड, नाउ इट्स एट 1280 1290. 700 का स्टॉप लॉस रहेगा. And of course, to explain you about the lot size, 5 का lot size है इसका. So per rupee change will be 5 rupees for silver mini. And gold में अगर आप ट्रेड करो तो in gold mini you have the lot size of 10. And of course natural gas which I suggested, it has a lot size of 1250 MMBTU. So per rupee change you have 1250 rupees का M2M. 235 का put now at trading at 1320 1330 so far. I guess we will not be able to catch more within this session, but as we progress towards the evening session, after 6 o'clock or 7 o'clock, we might get some more. So I will ask you to keep the levels on your radar. 238 जब तक break नहीं हो रहा on the side, on the higher side, you have to be in the sell on rise kind of trades. That's why 235 put we have suggested. 700 का stop loss रखिए और hold कीजिए evening तक. Last crude के session में भी ऐसे ही हुआ था. In the meanwhile the session we were not able to catch the good move, but जो levels suggest किए थे उसके accordingly crude went down by 100 points, and जो 70 रुपए पे option बताया था that went up to 200. So this might happen today also because there's a higher chance कि silver mini is likely to fall today. So looking at other commodities, in the base metals pack, there's not much happening. Aluminium भी अगर देखेंगे, it has fallen from the higher levels, so it's trying to settle down a little bit. तो यहीं पे कहीं पे settle होता है, then we might get a chance. अगर ये फिर से reclaim करता है 365 367 kind of levels, then we might be able to look at as a buying opportunity. But as of now, there's no play in aluminium. Aluminium में कुछ play नहीं है. In the copper also there's no play for positional. जब तक ये levels clear नहीं होते, on the upside 1350 1340 kind of levels, and not on the downside I would say 1280 kind of levels, जब तक clear नहीं होते तब तक there's no play in copper also. So base metals pack, I would ask you to avoid for a few days as long as there's no clear breakout or breakdown. Coming back to silver mini, 15 minutes chart. Okay, so second candle भी अभी close हो चुका है इसका, so which is also a doji candle and it's a red candle. So next candle अगर sustain होता है 235 600 के नीचे, and according to our plan it's sustaining below the breakdown level, so we might see a good move in the evening. So as we approach to the end of this session, I would ask you to keep the levels in mind. 238 के ऊपर ही आपको लॉन्ग करना है आज, उसके बगैर लॉन्ग नहीं करना है. एंड 235 अगर ब्रेक होता है यू कैन गो एग्रेसिवली शॉर्ट ऑन सिल्वर, सो एग्रेसिवली यू कैन बाय पुट ऑप्शंस. एंड फॉर ऑप्शन सेलर्स, 2,30,000 पुट and 2,45,000 call. That will be your
option selling strategy, which is short triangle. So we will end this. Okay, 235 700 it's going on now. ओके 1400 रुपए का भाव हो चुका है. 1416 का भी जस्ट हाई मारा इसने. So we can't be there for whole evening session till the expiry. So we have a limited time for this session. Of course, we will try to cover all other expiries also. In the next week, we have natural gas expiry, which is lined up on Tuesday. So we will try to cover as much movement as we get. But we are now clear on the direction of the silver mini for this expiry. You have to go short only, not long. जब तक 2,38,000 क्रॉस नहीं हो रहा है आपको शॉर्ट में ही बने रहना है. दैट्स व्हाई वी आर सजेस्टेड 2,35,000 का पुट. So that's it from my side today for silver mini expiry. We will of course catch up again in the next week. Thank you all and have a very happy trading session to you all. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.